So guys, I guess revision is going very strong now. We are done with equity, we are done with bonds, we are done with dividend policy, we are done with mutual funds. अब हम लोग एक next chapter पे जाते हैं. And I'm taking one of the key chapters in your SFM, and that is known as Forex. Rate किसका है? In fact, a lot of student tells me, sir, आप तो ये chapter का नाम बदल दो और रख दो rate किसका है. Forex, guys, I have taken this chapter into parts and I'm going to teach you some basics right from the beginning and revise basically, not teach you now. तो title लिख के रखा है मैंने Forex पे हम basics करेंगे and basics पे we are going to learn this 11 points together at one shot. Take up the question in middles also. So we'll go point by point, guys. The first point is exchange market. Forex is all about rupee, dollar, pound and so on. So सबसे पहले एक exchange market. A market मतलब it's a place whereby we buy and sell the foreign currency. Not literally a place nowadays. So it's not कि आप यहाँ जाओ उसका shop है वहाँ से चीज़ खरीद लो. It's all online now. So market basically is a system by which the currency is transferred from one place to another. Do you agree with that one? That's a Forex market. Peculiarity about this Forex market, it never closes. It runs 24/7. India sleeps, US gets up. Maybe US sleeps, Australia gets up, UK gets up. And you know, entire world it's like revolving. Na? Pura market, pura world market hai. So Forex market is a market which runs 24/7, 365 days a year. Absolutely no holidays on this market. That's Forex. Your books, guys. I'm on page number 46. First one, foreign exchange market. A foreign exchange market is a market in which individuals, firms and banks buys and sells the foreign currency and foreign exchange. It is over the counter market. Now it is over the counter market matlab OTC. There are two types of market. One is known as exchange traded and one is known as OTC. Exchange traded market का मतलब है the product is designed, you have to buy and sell that designed product. Product will not be designed for you, it's pre-designed. पहले से एक product है बस वही खरीदना. So when you go to a shop and say ये pen चाहिए तो pen is a designed product, आपके हिसाब से वो बनाएगा नहीं. You cannot say ये length ज़्यादा है इसको cut short कर दो. So that cannot be possible. It's like going to a shopper's shop and buying a shirt. It has a predetermined size, predetermined nature, color. है ना? That's exchange traded. And second market that we have is known as OTC, over the counter market. When I say over the counter market, the product can be designed according to your own requirement. Next one, where foreign currencies are bought and sold against one another. It is regulated by RBI. In India, Forex market is regulated by RBI, who authorizes some agents who can buy and sell the foreign currency for RBI. In India, guys, nobody can carry the foreign currency. So it's only the RBI who authorizes this. Are we clear with that one? That is foreign exchange market. The second point that we are going to study is known as exchange rate. Exchange rate, now that's what I call it as rate किसका है. So suppose अगर मैं लिखता हूँ रुपी पर डॉलर 50, तो ये रेट किसका है? डॉलर का. रुपी पर डॉलर, डॉलर इज अवेलेबल एट 50 रुपीज. एज आई टोल्ड यू एट द इंट्रोडक्शन ऑल्सो ना, स्टार्टिंग में जब भी मैंने ये चैप्टर सिखाया आपको, तो वी ऑलवेज यूज टू बी थिंकिंग कि प्रोडक्ट कौन सा है. और ये चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है द प्रोडक्ट एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी बाय अ प्रोडक्ट बोथ आर मनी. सी मार्केट में पेन लेने जाते हैं तो उसको पूछेंगे भाई पेन कितने में दिया, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द पेन, ही सेज 50 रुपी. सो आई नो पेन इज अ प्रोडक्ट, 50 रुपीज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच आई कैन बाय अ पेन. इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. But here, what are we going to buy? Money. What are we going to pay? Money. So the problem in this chapter is always to define the product. So guys, जब भी हम लोग बोले रुपी पर डॉलर, then you need to understand rate किसका है? डॉलर का. $1 खरीदने के लिए I'll have to pay 50 रुपी. Clear? Simple. रुपी पर पाउंड, रेट किसका है? पाउंड. पाउंड पर यूरो, यूरो, यूरो पर डॉलर,
डॉलर पर रूपी रेट किसका है? दैट्स एन एक्सचेंज रेट. आर वी क्लियर विद दैट वन? एंड द एंटायर चैप्टर इज डिफाइंड ऑन रेट किसका है. नेक्स्ट वन, एक्सचेंज रेट के बाद आता है एक्सचेंज रेट कोटेशन. Exchange rate quotation, we can have a direct quote and we can have a indirect quote. Now what do you mean by direct quote and what do you mean by indirect quote? Coming back to the topic once again. First one, rupee per dollar. Rate किसका है? डॉलर का. This is a direct quote for rupee. This is not a direct quote for dollar. This is a direct quote for rupee. So if I say rupee per pen is 50, this is a direct quote not for pen, this is a direct quote for rupee, by 50 rupee per pen. So this is direct for rupee and this is indirect for dollar. So suppose if I change this and now I write rupee per euro 75. So first one, rate किसका है? यूरो. डायरेक्ट किसके लिए है? रूपी. इनडायरेक्ट किसके लिए है? यूरो. गॉट दैट? टू गुड. सपोज इफ आई राइट रूपी पर येन 0.2, रूपी पर येन 0.2, तो रेट किसका है? येन. डायरेक्ट किसके लिए है? रूपी. इनडायरेक्ट किसके लिए है? येन. Concept samjha? So we have an exchange rate and then we have exchange rate quotation. That means we can have a direct quote and we can have a indirect quote. Too good. Chalo, next one. We go ahead and the next part that we are going to study is known as bid, ask and spread. Bid, ask and spread का मतलब क्या है? Now when you go to the Forex markets now, the rate, the exchange rate quotation that will be available to you will be something like this. Rupee per dollar 50/52. There will be not one rate, guys, there will be two rates. Rupee per dollar 50/52. Why two rates? You know, you go to any wholesale market, you will always find two rates of a product. Of course you have not seen this till today. हमने देखा नहीं है इसे. And the reason is, क्यों नहीं देखा है हमने? Because अब तक हम लोग जो भी मार्केट में जाते हैं ना, it is predefined, either we are a buyer or we are a seller. If I go to a stationery shop and ask for a price of pen, I am a buyer. If I go to hotel and say डोसे का कितना, तो I am a buyer. Do you agree with that one? For me, if I am running the classes, then I am a seller of services. So that relationship is predefined. But if we go to a market where we will have buyers and sellers coming together, there are two rates going on. One is a buy rate and one is a sell rate. So guys, if you remember, rupee per dollar, first of all, rate किसका है? डॉलर. डायरेक्ट किसके लिए? रूपी. और इनडायरेक्ट किसके लिए? डॉलर. Next thing is very important to learn. 50 is known as bid rate, 52 is known as ask rate, and 50 and 52 का difference is 2 is known as a spread. So we have a bid rate, we have a ask rate, and we have a spread rate. Bid rate means a rate at which bank authorized agent is ready to buy the product. Ask rate is the rate at which the authorized agent is ready to sell the product. So the authorized agent जिससे मुझे ये रेट मिला है is ready to buy a dollar at 50, is ready to sell a dollar at 52, and the difference of 50 and 52 is 2 is known as spread. Are we clear? Chakas? Too good. पर आप याद रखना गाइस, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, the questions that we are going to solve are not from the bank's point of view. The questions that we are going to solve are from customers, our clients' point of view. So if bank is ready to buy the dollar at 50, हमारे लिए ये sell rate होगा and 52 हमारे लिए buy rate होगा. So for me it is not very important unless and until examination specifically tells us or requires us to calculate something that is known as a bid rate and an ask rate. I don't remember bid and ask. In fact, I remember buy and sell. Bank का sell is equal to my buy. Bank का buy is equal to my sell. So मैं क्या करता हूँ?
रुपी पर डॉलर 50/52, रेट किसका है? डॉलर का। डॉलर का बाई रेट क्या है? 52, एंड डॉलर का सेल रेट क्या है? 50। गॉट दैट? अगर मैं आपको एक अलग करेंसी और उसका कोई रेट दे दूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू डॉलर पर पाउंड 1.2 1.3, तो रेट किसका है? पाउंड। पाउंड बाई रेट क्या है? 1.3, और पाउंड सेल रेट क्या है? 1.2, and the difference of 1.2 and 1.3, that is 0.1, will be referred to as spread. And a common sense that you all should have always, and that is the spread should be positive, always be positive. Are we clear? If you have attended my lectures guys, ये सारे wordings बहुत common होंगे मेरे हर एक lectures में. Perfect है? जकास. चलो, taking it ahead. सबसे इंपॉर्टेंट फंडा पे आता है. आप पेजेस देखते जाइए. एक्सचेंज रेट, रेट किसका है? वी आर डन. एक्सचेंज रेट कोटेशन, वी आर डन. बिड आस्क, वी आर डन. एंड स्प्रेड शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, लास्ट लाइन पे लिखा है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज करेंसी कन्वर्जन्स. हमारा 80% चैप्टर तो यहीं खत्म हो जाएगा अगर हमें करेंसी कन्वर्जन आ जाएगा. व्हाट इज करेंसी कन्वर्जन? द एंटायर चैप्टर रिक्वायर्स अस टू कन्वर्ट रुपी इंटू डॉलर, डॉलर इंटू पाउंड, पाउंड इंटू यूरो. कन्वर्ट ही करना है पूरे चैप्टर में. सो करेंसी कन्वर्जन, एंड आई हैव डिवाइडेड दिस करेंसी कन्वर्जन इनटू 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज चॉइस ऑफ रेट, सेकंड वन इज नोन एज मल्टीप्लाई डिवाइड. चॉइस ऑफ रेट, मल्टीप्लाई डिवाइड. परफेक्ट है? ओके. इसको याद कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके बुक्स में. इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप चेक करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स. आर यू लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1? Rupee per pound 82.20, 82.40. Rupee per dollar 59.10, 59.40. Euro per yen 0.0093, 0.0097. A European firm having surplus funds of euro 80,000 wants to invest in Japan. What amount of yen it will be able to invest? An Indian student decides to do a CPA course. The price of the course is $1,800. How much rupee is required? A US firm exports to India and receives rupee 42,80,000 and wants to convert into dollar. How much dollar is received? Convert करना है, currency conversions पे जाना है. We'll take it one by one so that you remember very things. Question number 1, I'm looking at A subsection. First, European firm wants to invest funds of euro 80,000 and wants to invest in Japan. It's a European firm. Design, European firm, invest in Japan. यूरोपियन फर्म को जापान में इन्वेस्ट करना है. और कितना जापान में इन्वेस्ट करना है? यूरो 80,000. नाउ दे वांट टू नो कि अगर जापान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितने येन का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे लोग. फर्स्ट थिंग, बिफोर वी गो टू स्टेप नंबर 1 and 2, सबसे पहले तो प्री डिटर्मिनेशन. यू आर इन यूरोप. दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिजाइन ऑफ अ क्वेश्चन वी शुड ऑलवेज डू. हम कौन है? यूरोपियन फर्म. कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जापान. यूरोपियन फर्म यूरो. जापान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं येन. यूरो येन का कोई रेट निकालो. एंड आई कैन सी द लास्ट लाइन में यूरो पर येन दिख रहा है आपको. यूरो पर येन 0.0093/0.0097. दिस इज रेट किसका है? येन का. येन का बाई रेट, येन का सेल रेट. Are we clear? Too good. Next thing. Now the 2 steps starts. Step number 1, choice of rate, and step number 2, multiply divide. I am in Europe. I want to go and invest in Japan. Yen. जापान में जाके यूरो तो इन्वेस्ट नहीं होगा ना, जापान में जाके येन इन्वेस्ट होगा. मैं यूरोप में हूँ, मेरे पास यूरो है, मुझे वहाँ पे जाके येन इन्वेस्ट करना है. In simple language, can I say I want to buy the yen? जापान में इन्वेस्ट करने के लिए I'll have to buy the yen. And second thing, यहाँ पे जाके रेट चेक करने का. रेट किसका है? येन. और येन बाई करने का है
तो येन का रेट है, येन बाई करना है, बाई रेट चल रहा है 0.0097. दिस इज चॉइस ऑफ रेट. अगर आप यूरोप में हो और आपको येन इन्वेस्ट करना है तो येन खरीदना पड़ेगा. सपोज, जस्ट सपोज, यहां पे रेट यूरो पर येन नहीं दिया था, येन पर यूरो दिया हुआ था. इफ दे आर गिविंग यू रेट विच इज येन पर यूरो, तो इन दैट केस क्या सोचना पड़ेगा मालूम है? आई वॉन्ट टू बाई द येन, बट ये येन का तो रेट ही नहीं है, ये यूरो का रेट है. तो रिवर्स थिंकिंग, इफ आई वॉन्ट टू बाई द येन इट ऑल्सो मीन्स आई वॉन्ट टू सेल द यूरो. तो इन दिस केस अगर ये रेट दिया होता तो बाई रेट नहीं लगता, कौन सा रेट लगता? सेल. क्लियर? ओके. अभी यहां पे क्या है? आई वॉन्ट टू बाई द येन और येन का रेट है तो येन बाय, कंप्लीट. स्टेप 1 चॉइस ऑफ रेट. स्टेप 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो स्टेप 2 देखने के लिए अमाउंट कौन से करेंसी में दिया है? यूरो. और रेट किसका है? येन. तो डिवाइड. अगर अमाउंट यूरो में दिया है और रेट भी यूरो का है तो मल्टीप्लाई. सेम करेंसीज मल्टीप्लाई, ऑपोजिट करेंसीज डिवाइड. सो इन दिस केस यू विल डिवाइड 80,000 बाय 0.0097 इज इक्वल टू, कैलसीज गाइस हाथ में होना चाहिए, 80,000 डिवाइड बाय 0.0097 इज इक्वल टू येन 8 लाख 24,000, 82 lakh actually, 47,423. So a European firm will be able to invest yen 82 lakh 47,423 into the Japanese market. Are you understanding? Too good. जकास ना? चलो आंसर चेक कर लो आपका. 82 lakh 42,422.68 and that's what I've said, 423 yen. 2. An Indian student decides to do a CPA course. The price of the course is $1,800. How much rupee is required? B. Indian student. US में CPA करना है. Fees are $1,800. So we are an Indian student. US जाना है, CPA कोर्स करना है, $1,800 is a fee. But since I am an Indian student, I would be rather be wanting कि my fee should be in terms of rupee. मुझे ये पता चलना चाहिए रुपी कितना पे करना है. तो सबसे पहले even before touching step number 1 and 2, 1 is choice of rate, 2 is multiply divide. पहले तो रेट लो. कहने से मुझे कोई रुपी डॉलर रेट चाहिए होगा. And the rate that they have given to me, पॉइंट नंबर 2 पे रुपी पर डॉलर, रुपी पर डॉलर 59.10, 59.40. रेट किसका है? डॉलर. डॉलर बाय डॉलर सेल. ये बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया. नाउ 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 चॉइस ऑफ रेट. आई एम इन इंडिया, यूएस जाना है, डॉलर पे करना है. डॉलर पे करने के लिए कैन आई हैव टू बाय द डॉलर. रेट किसका है? डॉलर. आई वॉन्ट टू बाय द डॉलर, तो बाय. दैट्स स्टेप नंबर 1 चॉइस ऑफ रेट. स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो फीस किसका है? डॉलर 1,800. रेट किसका है? डॉलर. अमाउंट भी डॉलर, रेट भी डॉलर, तो मल्टीप्लाई. इट विल बी 1,800 into 59.40. योर कैलसीज प्लीज. 1,800 into 59.40 is equal to 1,06,920 rupee. Rupee 1,06,920. Simple, too good. Acha. Third one. This is A, this is B, and this is C. What is C now? क्या करना? A US firm exports goods to India and receives rupee 42,80,000 and wants to convert it into a dollar. How much dollar is received? US firm exported to India, received rupee 42,80,000. So in this part, हम लोग कौन है? Guys, we are a US firm. यूएस फर्म को कहां इन्वेस्ट करना है? सॉरी, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है. यूएस फर्म ने क्या किया है?
दे हैव एक्सपोर्टेड गुड्स टू इंडिया, उसे रुपी 42,80,000 मिला। अभी यूएस में 42,80,000 घूम के क्या करेगा, डॉलर चाहिए ना। सो कैन आई से अगेन यूएस फर्म इन इंडिया वी रिक्वायर अ रुपी डॉलर रेट समवेयर, और डॉलर रुपी जो भी दिया हो। अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव गिवन यू रुपी पर डॉलर का रेट, सो रुपी पर डॉलर 59.1 स्लैश 59.4। रेट किसका है, डॉलर, डॉलर बाय डॉलर सेल। चलो मैं यूएस में, if I'm in US and I have got rupee 42,80,000, can I say I have to sell the rupee? I have to sell the rupee. पर रेट चेक करना, जाके सेल को अंडरलाइन मत कर देना, फंस जाओगे। That's what I said, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द की। सेल रेट नहीं लगेगा बिकॉज ये रुपी रेट है ही नहीं, ये तो डॉलर का रेट है। सो इफ आई वांट टू सेल द रुपी आई वांट टू बाय द डॉलर, सो बाय रेट लगेगा बिकॉज आई हैव टू बाय द डॉलर। गाइस टू दैट इज बी एंड सी में यही डिफरेंस है। बी में आई वाज स्टैंडिंग इन इंडिया, यूएस में जाके सीपीए करना है तो आई हैड टू बाय डॉलर, डॉलर का रेट लगा दिया, बाय रेट लग गया। सी में आई एम नॉट इन स्टैंडिंग इन इंडिया, आई एम स्टैंडिंग इन यूएस और मेरे हाथ में रुपी है, सो आई वांट टू सेल द रुपी, बट सेल द रुपी कर नहीं पाएगा बिकॉज ये रेट तो डॉलर का है, सो सेल द रुपी इज इक्वल टू बाय द डॉलर। लॉट ऑफ पीपल डू द इनवर्स रेट्स इन ईयर, प्लीज इनवर्स रेट्स यूज नहीं करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने कॉन्फिडेंटली यही सिखाया कि आप जो रेट दिया है वही रेट एग्जामिनेशंस में यूज करेंगे, है ना। कंटिन्यूएशन, सेकेंड थिंग मल्टीप्लाई डिवाइड सेलेक्ट करना है। सो 42,80,000 इज रुपी एंड रेट किसका है, डॉलर, सो वी नीड टू डिवाइड 42,80,000 डिवाइडेड बाय 59.40. So guys, 42,80,000 divided by 59.40. I'm getting an answer of 72,053.87. $72,053.87. US firm receives $72,053.87. Are we clear on this? पक्का, टू गुड। चलो दैट कंप्लीट्स माय करेंसी कन्वर्जन्स। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। करेंसी कन्वर्जन्स के बाद इनवर्स रेट्स पूरे चैप्टर में कहीं पे भी जरूरत नहीं है इनवर्स रेट्स की, पर इनवर्स रेट्स निकालना आना चाहिए। ये लोग क्या कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, हाउ टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज इनवर्स रेट्स। और इनवर्स रेट निकालना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन इनवर्स रेट। क्या दिया, गिवन रुपी पर डॉलर एट 59.10/59.40 कैलकुलेट डॉलर पर रुपी रेट। रुपी पर डॉलर 59.10/59.40। गाइस रेट किसका है, डॉलर का। बाय रेट 59.40, सेल रेट 59.10। परफेक्ट ना, टू गुड। इनवर्स रेट मतलब दिस इज रुपी पर डॉलर, डॉलर का रेट है, हमें डॉलर पर रुपी निकालना है, इनवर्स करना है। तो याद रखना इट विल बी 1 बाय क्रॉस जाना है 59.40/1 by 59.10, 59.40, 59.10 क्रॉस में जाना है। नाउ 1 divided by 59.40, आंसर इज 0.016835, 0.016835। परफेक्ट है। स्लैश 1 divided by 59.10 is equal to 0.016920. Is this clear? और भूल से मिस्टेक भी हो जाए ना, व्हाट इन इंग्लिश आई एम स्पीकिंग ना, भूल से मिस्टेक, बट एनीवेज अगर मिस्टेक भी हो जाए ना तो प्लीज याद रखना दैट स्प्रेड शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो इफ यू डू 1 by 59.1 and 1 by 59.4 ना, आपके रेट्स उल्टे दिखेंगे एंड स्प्रेड कैन नेवर बी नेगेटिव।
एग्जामिनेशन में जाओ ना, प्लीज यू शुड अंडरस्टैंड आई एम सिटिंग राइट बिसाइड यू एंड टॉकिंग टू यू. Got that? Spread cannot be negative. Spread should always be positive. That's inverse rate. Too good. Next one. Inverse rates के बाद हम लोग जाते हैं to a next section, point number 7, that is known as arbitrage. अच्छा, now what is arbitrage? Simple basic fundas clear कर लो arbitrage के. Now arbitrage means to make riskless profit, to buy the commodity from one place to sell the commodity at another place and to make a profit. This is arbitrage. Buy, sell. Arbitrage करने के always दो path होंगे, that is path A, path B. It's possible कि ये दोनों path हमें loss दिखा दे. It is not possible that both the paths will show you profit. And it is genuinely possible that we can have profit in one path and loss on another path. That's an arbitrage. I'll repeat, every arbitrage will have two paths. Both the paths can show you loss, both the paths cannot show you profit. One path can show you profit, one path can show you the loss. Arbitrage is a process by which investors make riskless profit. Rules of arbitrage, there are possibly two paths of arbitrage. Both the paths can never show the profit, both the paths can show you the loss. One path can show profit and one path can show you loss. Two-way arbitrage. Now, ये जो rates है, who gives us this rates? Banks. और banks को ये rate कहाँ से मिलता है? RBI. Now RBI gives guidance rate. Bank can decide on their own rates. You know, plus minus हर एक बैंक में चलता रहता है. It's very much like interest rates. Bank gives you interest rate also, but you know, interest rate in one bank can be different from interest rate in another bank also. So they can be different. Interest rates in one bank, interest rates in another bank. They can be different. Similarly, foreign exchange rates in one bank and foreign exchange rate in another bank can be different. And you can exploit that and do an arbitrage. Have a look at illustration number 3. Consider the following quotes. Bank A, rupee per dollar. Bank A, rupee per dollar. Illustration number 3. Bank A, rupee per dollar. 55.40, 55.80. रेट किसका है? डॉलर, डॉलर बाय, डॉलर सेल. बैंक बी में गए तो वहां पे भी एक रेट अवेलेबल था, रुपी पर डॉलर. बैंक बी में रुपी पर डॉलर है 55.90 स्लैश 56.40. ये भी डॉलर का रेट है. दिस इज डॉलर बाय, दिस इज डॉलर सेल. नाउ एकदम आराम से देख के ये बताओ, कैन यू डू एन आर्बिट्राज, रिस्कलेस प्रॉफिट? कैन यू बाय the dollar का rate है from one bank and sell the dollar to another bank and still make a profit? Answer is yes. You can buy the dollar at 55.80 from bank A and sell the dollar at 55.90 to bank B and make a profit of 0.10. And what are you supposed to do? Nothing. Just go to bank A, sell it to bank B. Got that? Jackass? Too good. Next one. This is known as arbitrage. Arbitrage के साथ ही एक connected topic है, and that connected topic is known as overlapping. Now this arbitrage that we discussed right now is not existing all the time. Guys, if this was existing all the time and between all the banks, everybody would in the world do arbitrage only. Possible नहीं है. This is very rarely possible, and this is only possible for even, you know, seconds, maybe minutes maximum. आज तो भूल ही जाओ, because automatically ये दोनों बैंक अपने रेट्स को एडजस्ट कर देंगे and आर्बिट्राज का गैप बंद कर देंगे. Have a look at the question, guys. I'm looking at question number 4. Bank A 55.40, 55.80. Bank B 55 point, this is 80 and this is 55.60, 56.40.
बाय सेल बाय सेल. डू यू अग्री विद दैट वन? अब आप चेक करो, इज आर्बिट्राज पॉसिबल? यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करोगे तो लॉस होगा, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करोगे तो भी लॉस होगा. इन शॉर्ट कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं है. आर्बिट्राज इज नॉट पॉसिबल. And both the paths can show you the loss. That's what I told you. So one path, buy and sell. Two path, path number 2, buy and sell. Both the paths can show you the loss. But both the paths can never show you the profit. But yeah, one path can show you profit, one path can show you loss. This is known as concept of overlapping. Generally, rates overlap. There is no possibility of arbitrage. If possible, you can buy at one place, sell to another place. That is arbitrage. Do you remember this? That's overlapping. That's arbitrage. Taking it ahead. Next concept. Cross rates. कौन सा rates? Cross rates. ये बहुत important role play करता है आपके फॉरेक्स में. Cross rates का मतलब है कि फाइंडिंग आउट रेट्स बिटवीन टू करेंसी यूजिंग वन कॉमन करेंसी बिटवीन देम. नाउ मुझे यूरो रेट निकालना है. आई वेंट टू अ बैंक एंड आई सेड रुपी यूरो रोड दो. दे सेड नॉट अवेलेबल. आई सेड व्हाट इज अवेलेबल देन? दे सेड सर रुपी डॉलर इज अवेलेबल एंड डॉलर यूरो इज अवेलेबल. सो डॉलर इज कॉमन अमॉन्ग बोथ ऑफ देम. डॉलर इज कॉमन अमॉन्ग बोथ ऑफ देम. Do you agree with that one? पर हमें रुपी यूरो चाहिए तो हम लोग एक रेट डिफाइन करेंगे. रुपी डॉलर एंड डॉलर यूरो यूज करके डॉलर डॉलर कैंसिल कर देंगे एंड वील फाइंड आउट रुपी यूरो रेट्स. दे आर नोन एज क्रॉस रेट्स. और मैंने आपको 3 क्रॉस रेट सिखाया. उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका रिकॉल. फर्स्ट वन, रुपी पर डॉलर. रुपी पर डॉलर के बाद डॉलर पर यूरो. और मुझे रुपी पर यूरो रेट चाहिए. रेट A, B, C, D. If you can recall what have I taught you before also, and if you're looking at my revision lectures for the first time, then also it is helpful. Guys, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, हमें रुपी यूरो मिलेगा. अभी आप चेक करो, आपको रुपी यूरो रेट चाहिए. व्हेन यू लुक एट रुपी यूरो, कहना से आपको रेट क्रॉस में चाहिए. अगर हमें रेट क्रॉस में चाहिए तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड गो स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई. स्ट्रेट. अगर हमें रेट क्रॉस में चाहिए तो स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई का मतलब है A इंटू सी स्लैश बी इंटू डी. स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. पक्का? ओके. सेकेंड पॉसिबिलिटी, रुपी पर डॉलर, यूरो पर डॉलर. A, B, C, D. अगर अभी आप ये रेट्स को बराबर से देखेंगे तो कहना है डॉलर डॉलर कैंसिल. अभी भी रेट रुपी पर यूरो मिलेगा. बट नाउ इफ यू लुक एट द रेट्स दैट यू वांटेड, कहना है यू वांट अ रेट विच इज स्ट्रेट. जब भी आपको रेट स्ट्रेट चाहिए तो आपको क्या करना है? क्रॉस एंड डिवाइड. अगर हमें रेट क्रॉस में चाहिए तो स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई. अगर हमें रेट क्रॉस में चाहिए तो स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई. बट अगर हमें रेट स्ट्रेट चाहिए तो वी गो क्रॉस एंड डिवाइड. रेट स्ट्रेट चाहिए तो क्रॉस एंड डिवाइड. क्रॉस एंड डिवाइड. So it's basically A by D slash B by C. समझा? Too good. एक और वेरिएशन सिखाया था. डॉलर पर रुपी, डॉलर पर यूरो. A, B, C, D. तो यहां पे भी डॉलर डॉलर कैंसिल. और आपको रेट चाहिए रुपी पर यूरो. अभी भी रुपी पर यूरो मिलेगा. अभी भी आपको स्ट्रेट में रेट चाहिए तो आपको क्रॉस एंड डिवाइड ही करना है. पर अ पॉइंट ऑफ लॉजिक दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, कहना है यहाँ पे न्यूमरेटर्स कैंसिल हो चुके हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगा. सो यहाँ का कैलकुलेशन होगा C by B स्लैश D
by A, C by B, D by A. Are you understanding this? Too good. 3 things. अब आप मुझे वापस एक बार बताओ. हाँ, फर्स्ट वन, रुपी पर डॉलर, डॉलर पर यूरो, डॉलर डॉलर कैंसिल, ए बी सी डी. हमें रेट क्रॉस में चाहिए तो ए इंटू सी, बी इंटू डी. ओके, रुपी डॉलर, यूरो डॉलर, ए बी सी डी. डॉलर डॉलर कैंसिल, हमें रेट स्ट्रेट में चाहिए, क्रॉस एंड डिवाइड, ए बाई डी, बी बाई सी. थर्ड वन, रुपी डॉलर, not rupee dollar, I'd say dollar rupee, euro rupee, dollar euro, डॉलर डॉलर कैंसिल, ए बी सी डी. रुपी पर यूरो मिलेगा बट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो चुका है, तो डिनोमिनेटर से सी बाई बी, डी बाई ए. Got that? Too good. Please practice करना ये, because एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आ जाता है. I have put some questions into that. इनके questions भी आपको solve करके दिखा रहा हूँ मैं अभी. Have a look in your books again. Question number 4 हो गया था. Cross rates and go to question number 5. Bank A, डॉलर पर यूरो 0.9250 स्लैश 0.9280. बैंक बी, पाउंड पर यूरो 0.6150 स्लैश 0.6230. आर वी क्लियर विद दैट? अभी अगर हम लोग यहाँ पे बरोबर से नोटिफाई करें तो यूरो यूरो कैंसिल, तो हमें रेट कौन सा मिलेगा? डॉलर एंड पाउंड, डॉलर पर पाउंड रेट मिलेगा, एंड हमें रेट स्ट्रेट में चाहिए, सो हम क्या करेंगे? क्रॉस एंड डिवाइड. सो डॉलर पर पाउंड, इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली, डॉलर पर पाउंड विल बी 0.9250 divided by 0.6230 slash 0.9280 divided by 0.6150. Check the rates properly. I'm getting a rate of 1.4848 slash 1.5089. दिमाग में जा रहा है? Too good. Question number 6 देखिए. पाउंड पर यूरो. Question number 6, Bank A. पाउंड पर यूरो 0.9250, 0.9280 and euro per dollar 0.6150, 0.6230. ये रेट में गाइस यूरो यूरो कैंसिल, कैन आई से हमें रेट मिलेगा पाउंड पर डॉलर, पाउंड पर डॉलर रेट मिलेगा. आपको रेट क्रॉस में चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा? स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई. हमें स्ट्रेट चाहिए तो क्रॉस एंड डिवाइड, हमें क्रॉस चाहिए तो स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई. स्ट्रेट एंड मल्टीप्लाई 0.9250 into 0.6150 slash 0.9280 multiplied by 0.6230. Check that out. I'm copying the rates directly. 0.568875 slash 0.578144. Spread should always be positive. Please याद रखना. Got that? Too good. This is question number 6. We go to question number 7. एक और है. डॉलर पर यूरो, मैंने रेट ही बदलते रहे हैं. बैंक ए, क्वेश्चन नंबर 7. डॉलर पर यूरो
0.9250 slash 0.9280. Second one, dollar per pound is equal to 0.6150, 0.6230. अगर आप इस क्वेश्चन में बरोबर से देखेंगे देन वी हैव गॉट समथिंग दैट इज नोन एज डॉलर डॉलर कैंसिल और हमें रेट मिलेगा यूरो पर पाउंड. स्ट्रेट चाहिए, क्रॉस एंड डिवाइड, बट क्रॉस इस टाइम ना डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज न्यूमरेटर कैंसिल हो चुका है. सो 0.6150 डिवाइड बाय 0.9280 slash 0.6230 divided by 0.9250. Are you understanding that? Too good. Chalo, copy the rates. It is 0.6627 slash 0.6735. Chakas, that's the cross rates. Too good. Next one, next topic पे cross rates के बाद आपके बुक्स में भी आप चेक कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू अ टॉपिक नोन एज ट्रायंगुलर आर्बिट्राज. आर्बिट्राज, टू पार्ट्स. बोथ द पार्ट्स कैन शो यू लॉस, बोथ द पार्ट्स कैन नॉट शो यू प्रॉफिट. वन पार्ट कैन शो यू लॉस, वन पार्ट कैन शो यू प्रॉफिट. दैट्स आर्बिट्राज. ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में व्हाट विल दे डू इज दे विल गिव यू थ्री करेंसीज, रुपी, डॉलर एंड पाउंड. So what you have to do, convert one currency into another, second into the third, and then come back to the currency that you started with. So you start with rupee, you end with rupee. And arbitrage they are talking about. So arbitrage has got two parts. Part number one, rupee converted to dollar, converted to pound, converted to rupee. If this part shows you profit, pretty good enough. Both the parts cannot show you the profit and your responsibility lies in showing the path of profit. Do you agree with that part? Acha, on the second hand side, if the first path shows you loss, then you will go for second path. Second path is reversal. Start with rupee, convert it to pound. So it will not be rupee, dollar, pound, rupee. It will be rupee, pound, dollar, rupee. Two parts, one path will show you profit, one path will show you loss. Possible, both the paths can show you loss. Possible, both the paths can show you profit. Not possible. आपका responsibility कि आप path of profit दिखाए. Triangular arbitrage is doing arbitrage using three currencies. पक्का? Too good. Next one that we are going into is the TT commission. That will basically complete your basics of Forex. TT commission का मतलब है telegraphic transfer commissions. Agents do charge some commissions on transfers. Now we have TT buying commission and we have TT selling commission. So if the question gives you these commissions, then how to apply those commissions? In that case, I guess मैंने एक question रखा होगा उसमें आपके book में. Look at question number 8. Question number 8. The interbank quote is given as rupee per dollar 52.10, 52.70. TT buying commission is 0.20%, TT selling commission is 0.25%. Calculate TT buy rate and TT sell rate. First one, the rate that they have given to you is rupee per dollar 52.10 slash 52.70. Guys, ये rate किसने दिया है? अच्छा, ये rate किसका है? डॉलर. और रेट दिया किसने है? बैंक ने. टीटी बाइंग एंड टीटी सेलिंग कमीशन भी बैंक ने दिया है. तो भूल से बाय कमीशन आपके बाय पे मत लेना. नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट वी वर डूइंग टिल नाउ इज रुपी पर डॉलर, रेट डॉलर का है. बाय रेट 52.70, सेल रेट 52.10. डू यू अग्री? दिस इज व्हाट वी वर प्रैक्टिसिंग. बट बाय फॉर अ क्लाइंट, सेल फॉर अ क्लाइंट. बैंक का बाय क्या है? 52.10 एंड बैंक का सेल क्या है? 52.70. टीटी कमीशन भी बैंक ने दिया है, रेट भी बैंक ने दिया है. तो बैंक जो बाय बोलता है ना, वो अपना बाय है, मतलब बैंक का बाय, इट्स नॉट क्लाइंट का बाय. और बैंक जो सेल बोलता है वो बैंक का सेल है. क्लियर? सो टीटी बाइंग कमीशन वाज 0.20, वो बैंक के बाय पे लगेगा. And TT selling commission was 25%, 0.20%, 0.25%. This is how you should apply.
So buy should be on bank buy, sell should be on bank sell. After doing that, now you need to understand whether you want to add or less. तो add or less सोचने के लिए आप आ जाओ क्लाइंट के साइड पे. क्लाइंट के लिए बाई कौन सा है? कैन आई से 52.70. तो बाई का कमीशन ऐड होगा. और क्लाइंट के लिए सेल कौन सा है? कैन आई से 52.10. तो ये लेस होगा. बाय और सेल सोचना है पहले बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐड या लेस सोचना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. सो 52.70 प्लस 0.25%, आई एम गेटिंग 52.83175 and slash 52.10 minus 0.2%, I am getting 51.9958. Are we clear? Too good. Chalo. So guys, that completes your entire basic of Forex that I wanted to teach you. We go on to the second part of the Forex now. And second part में हम लोग क्या सीखेंगे? पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ and then we can start working on that list. So in second part, you are going to study the first one, spot rate. आपके बेसिक्स खत्म हो गए. सेकेंड, फॉरवर्ड रेट. We will revise spot rate, we will revise forward rates, we will revise premium or discount. Premium or discount. Fourth one, we will discuss swap rates. Fifth one, we will discuss forward cover, hedging. I would say hedging में one, that is known as forward cover. Sixth, we will see cancellation of forward cover. Seventh, we will see extension of forward contract. So in this part, we have to study 7 things: spot rate, forward rate, premium, discount, swap rates, hedging, part number 1, that is forward cover, and cancellation of forward cover, and last one is extension of a forward contract. First one, spot rate. Spot rate is a rate which is available today and applicable today. अगर आज हमें कोई फॉरेन करेंसी बाय या सेल करना है तो rate which is applicable today and which is available today is known as the spot rate. So if I tell you rupee per dollar, spot rupee per dollar 50/51, तो रेट किसका है? डॉलर. बाय रेट 51, सेल रेट 50. Spot for today, that's known as spot rate. Your books. Spot rate. It's a rate at which one can buy and sell the foreign currency immediately. Immediately means in 2 days. In 2 days, matlab it's like a normal, a check transaction which takes 3 days to clear. So suppose if you buy dollar today, you will not get dollar in your account right now. You will get it within 2 days. That's okay. Forward rate. Now people are really confused with this word forward rate. Now forward rate means a rate which is available today. Today. आज ही पता है. But for a transaction which is to be taken place in future. So suppose if I go to the market and I said, ये pen कितने में? They'll tell me, sir, 10 रुपया. So I can pay 10 and buy a pen today. I don't want to buy a pen today. I want to buy this pen after 6 months. So I'll go and ask him, bhai, what will be the rate of the pen to be purchased after 6 months? That's the forward rate. But he will tell me the rate today only. So he tells me, sir, I'll give you this pen after 6 months for 12 rupee. So a rate of a pen after 6 months or to be purchased after 6 months is 12 rupee. And if I enter into an agreement with him that, okay, done, set,
I'll buy a pen from you after 6 months at 12 rupee. That's known as a forward contract. So we both have an understanding that I'll pay him 12 rupee after 6 months and he'll pay me, or he will give me a pen. That's forward rate. Your books again. Forward rate. It's a rate fixed today for buying or selling foreign currency later. Note, both the spot rates and the forward rates are known today. Are we clear? What are people confused with is, उनको लगता है स्पॉट रेट सर आज पता है, फॉरवर्ड रेट हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा. नहीं, फॉरवर्ड रेट भी हमें आज ही पता है, बट ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होने वाला है. Got that? Too good. Next one is forward premium or discount. Premium or discount. Now, let me tell you, spot rupee per dollar is 50. 2-month forward rupee per dollar is 52. What's the interpretation? Rate किसका है? Dollar. That means I can buy the dollar today at 50, or I can buy the same dollar after 2 months at 52. अगर आज खरीदना है तो 50 पे करना पड़ेगा, अगर 2 महीने के बाद खरीदना है तो 52 पे करना पड़ेगा. That means dollar is becoming expensive. So dollar is said to be at premium. And if dollar is said to be at premium, I want to know by what percentage premium. So forward premium or discount on dollar, I'm not giving you a formula for premium or discount differently. That's a single formula. In fact, formula premium या discount है का है ही नहीं. Formula है डॉलर का और रुपी का. रुपी पर डॉलर, रेट किसका है? डॉलर. तो डॉलर का अगर प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए F minus S upon S into 100 into 12 by N. F is forward minus spot upon spot into 100 into 12 by N. ये फॉर्मूला किसका है? प्रीमियम का? नहीं. डिस्काउंट का? नहीं. ये फॉर्मूला किसका है? प्रीमियम और डिस्काउंट अगर डॉलर का कैलकुलेट करना हो तो. Another simple funda that you should remember is that if dollar is at premium, rupee is at discount. Sure shot, but not by same percentage. So if the question tells me calculate premium or discount on rupee, then I would have a formula which says forward premium or discount on rupee. Forward premium or discount on what? Rupee is equal to S minus F upon F into 100 into 12 by N. फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा. और रीजन सिंपल है. फॉर्मूला क्यों उल्टा हो जाएगा? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डॉलर नाउ. रेट किसका था? डॉलर. क्वेश्चन पूछता है रुपी कितना डिस्काउंट पे, तो फॉर्मूला उल्टा. लोग सोचता है प्रीमियम का स्ट्रेट, डिस्काउंट का अलग. नहीं. Premium or discount on dollar same, premium or discount on rupee same. Have a look. Premium. And I'm going to question number 9. Spot rate. Exactly same rates दिया है जो मैंने आपको example में दिया. Rupee per dollar 50. 6-month forward rate, just the difference is not 2-month forward, it's a 6-month forward rate, rupee 52. Is dollar said to be at premium or discount? Calculate the forward premium or discount on dollar. भाई क्या लग रहा है तुमको? Dollar is at premium or dollar is at discount? And I'm looking at question number 9. $1 is at premium. As simple as that. At what percentage? To forward premium or discount on dollar अगर calculate करना हो तो formula is F minus S upon S into 100 into 12 by N. Forward 52 minus 50 on 50 into 100 into 12 by 6 is equal to, your calcies please. 52 minus 50 divide by 50 into 100 into 12 divide by 6. I'm getting 8%.
dollar is said to be at a premium of 8%. Pakka. Simultaneously, if dollar is at premium, rupee is at discount, but not by 8%. So, पूछा नहीं है उन्होंने, but I'm just writing it down. Third one, forward premium or discount on rupee. That's my practice. If I write premium here and I write discount here, people get confused. Sir, it's a formula for premium or it's a formula for discount? Answer is no. It's a formula for premium or discount on dollar and it's a formula for premium or discount on rupee. Rate किसका है? डॉलर. अब हम और प्रीमियम या डिस्काउंट किसका कैलकुलेट कर रहा है? रुपी. तो फॉर्मूला उल्टा होगा. Now what's the formula that we'll have to apply is equal to S minus F upon F into 100 into 12 by N. Spot 50 minus 52 upon 52 into 100 into 12 by 6. So first one, 50 minus 52 divided by 52 into 100 into 12 divided by 6. I'm getting an answer of 7.69% minus 7.69% is nothing but discount on rupee. So dollar is at premium, rupee is at discount, but not exactly by same percentage. Now, for example, अगर आपको इसी क्वेश्चन में या एक क्वेश्चन में रुपी पर पाउंड दिया है एंड आई एम टेलिंग यू 4 थिंग्स, आपको मेरे साथ फॉर्मूलाज बोलना है. पाउंड का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, पाउंड का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, रुपी का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, रुपी का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूलाज? पाउंड का प्रीमियम रेट किसका है? पाउंड. और पाउंड का प्रीमियम F माइनस एस अपॉन एस, F माइनस एस अपॉन एस. पाउंड का डिस्काउंट उल्टा ना, ना 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 ना, फॉर्मूला विल रिमेन F माइनस एस अपॉन एस. पाउंड का रेट है और पाउंड का प्रीमियम या पाउंड का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला रिमेन सेम. अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रीमियम, अगर आंसर माइनस में आएगा तो डिस्काउंट. Next one, rupee at premium S minus F upon F, rupee at discount S minus F upon F. Got that? जकास. चलो कहाँ पहुँच गए? स्पॉट रेट हो गया, फॉरवर्ड रेट हो गया, प्रीमियम या डिस्काउंट हो गया. We go to the next one, swap rates. Now what is swap rates? If we go to bank will give you spot rate and forward rate के लिए bank will give you swap rates. So taking the swap rates we have to calculate the forward rates. Have a look in your books again. Swap rates, कोई क्वेश्चन डाला नहीं है मैंने, पर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्वैप रेट्स, सपोज इफ rupee per dollar is given to you at 52.1 and 52.4, रेट किसका है? डॉलर. डॉलर बाय 52.4, डॉलर सेल 52.1. डू यू अग्री? ओके, दिस इज स्पॉट. आई गो टू द बैंक एंड आई टेल बैंक, भाई मुझे 6 मंथ फॉरवर्ड रुपी पर डॉलर दो. 6 month forward rupee per dollar. Now bank is not giving you rate, 6 month rate at rupee per dollar after 6 months. Instead of giving you rate, bank is giving you swap points. And bank told me, Rahul, it is going at swap of 60-90. 60-90. Is it an increasing number? तो dollar is at premium. Add करने का मतलब 6 month forward rupee per dollar would be 52.80/53.30. ऐड ही करना है और ये लास्ट है ना, लास्ट डेसिमल्स ही होगा. कॉन्सेप्ट समझा? अगर मैं तुमको बोल दूं दैट 6 month swap that is running is 90-60, 60-90 नहीं, 90-60 चल रहा है, तो इट्स अ डिक्रीजिंग नंबर ना.
दैट मीन्स डॉलर इज नॉट एट प्रीमियम, डॉलर इज एट डिस्काउंट. तो ऐड नहीं करना है, लेस करना है. आपका रेट आएगा 51.20 slash 51.80. If it's increasing, add it. If it's decreasing, less it. यार simple सी कहानी है swap rates पे. Do you understand that? Too good. Next one. After swap, we come to a very important logistic that is known as hedging. Hedging means safeguarding. I am a person who deals in Forex. I am an importer, I am an exporter. So if I am an importer, I import from countries. If I am an exporter, I export to countries. If I am an importer, I have to pay foreign currency. If I am an exporter, I'll receive foreign currency. और अगर स्पॉट में हो रहा है तो टेंशन नहीं है, बट अगर फ्यूचर में हो रहा है देन इट्स अ टेंशन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम एन इम्पोर्टर और मैंने यूएस से इम्पोर्ट किया. क्या पता है तुम लोग को, ये पेन बहुत खतरनाक पेन है. मैंने ये पेन इंपोर्ट किया $1 में. तो करंट रेट दैट इज गोइंग ऑन इज 60 रुपीज़. सो इन शॉर्ट मुझे लगा मैंने ये पेन खरीदा है 60 रुपीज़ में. अब वो सामने वाले को मैंने कहा कि आई विल पे यू आफ्टर 2 months. ही सेड राहुल ओके ठीक है. आफ्टर 2 months व्हेन आई गो टू पे हिम द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी पर डॉलर नाउ इज वर्किंग एट 62. So I'll end up paying him 62. मेरे को लगा था 60. I end up paying him 62. ₹2 में ज़्यादा पे कर रहा है ना. ज़्यादा पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस. एंड आई वॉन्ट टू सेफ गार्ड माई सेल्फ. भाई लॉस हो रहा है उसमें टेंशन नहीं है, बट टेंशन क्या है मालूम है, वो रेट ऊपर नीचे होता रहता है. तो मैं 2 महीने तक तो यही सोचता रहेगा कि 2 महीने के बाद रेट क्या होएगा ना. दैट्स द प्रॉब्लम. I want to safeguard myself, and to safeguard oneself it is known as hedging. And to safeguard foreign currency transactions, guys, I have got 6 hedgings to work with you. I'm going to teach you 6 hedgings. Right now I'm starting with 1. So hedge, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं आपको कौन से 6 hedge सिखाने वाला हूँ. 1 forward cover. Second, money market cover. Next one, future plus. Next one, future minus. Next one, call. Next one, put. मैं आपको ये 6 hedging सिखाने वाला हूँ. Forward cover, money market cover, F plus, F minus, call and put. Right now I'm teaching you forward cover. अच्छा, it's a very simple thing. Forward cover तो सबसे simple है. If you have FC receivable, FC का मतलब foreign currency receivable. If I'm in India, dollar is receivable, and I'm afraid that when I'll receive the dollars, the exchange rate might fall. So what will I do to safeguard myself, to protect myself right now only? I'll go to the bank and enter into a foreign contract. Not a foreign contract, a forward contract. And कौन सा forward contract करूँगा? FC sell. Hedging strategy है sell FC forward. Sell FC forward. I'll go to the bank and I'll tell bank, भाई 2 महीने के बाद मेरे पास $50,000 आने वाला है. I'll come to you. I'll give you $50,000. Sell $50,000. You will have to pay me rupee at a rate which is decided today. I may receive a higher amount or I may receive a lower amount, but at a rate which is decided today. At least वो 2 महीने का टेंशन तो नहीं. So if FC is receivable, forward cover strategy, sell FC forward. If FC is payable, forward cover का strategy is buy FC forward. In simple language, go to the bank, enter into a forward contract to buy or sell FC today is known as forward cover. Your books again. Question number, एकदम लास्ट लाइन पे आप देख सकते हो, और प्लीज़ ये रीड करना जो एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको.
Entering into a forward contract with a view to safeguard oneself is known as hedging. FC receivable strategy would be sell FC forward. FC payable strategy would be to buy FC forward. Look at question number 10. Question number 10. First one. US firm has euro 40,000 receivable after 6 months. Spot rate is dollar per euro 1.0427. 6-month forward rate quoted by the bank is 1.0527 per euro. How one can hedge his exposure? First one, who are we? US firm. Always design your question well in Forex. I've always kept on telling you. So first you should decide हम कहाँ पे हमें क्या करना है. A US firm, euro 40,000 receivable. After 6 months, I'm standing in US. After 6 months, 40,000 euro is receivable. So what am I afraid कि after 6 months when I'll go to the market and sell the euro, I might not get this price and ये 6 महीने तक fluctuate होता रहेगा रोज. भाई आज ही बता दो मुझे क्या मिलने वाला है ना. इन्होंने अपने को क्वेश्चन में बताया स्पॉट रेट जो एक्चुअली कोई काम का नहीं है फॉरवर्ड कवर में इज डॉलर पर यूरो 1.0427. Absolutely no relevance because आज तो यूरो आने ही नहीं वाला ना. 6-month forward dollar per euro 1.0527. 6-month forward. I'll go to the bank today, enter into an agreement. FC is receivable or FC is payable. I'm a US firm. FC is receivable. FC receivable. My strategy should be to sell FC forward. So I went to the bank. I said 6 महीने के बाद का रेट क्या चल रहा है. डॉलर पर यूरो. रेट किसका है? यूरो. चॉइस ऑफ रेट तो अवेलेबल ही नहीं है अपने पास, तो खाली मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. अमाउंट इज इन यूरो. दिस इज ऑल्सो इन यूरो. सो आफ्टर 6 months I will give to bank 40,000 euro and bank will give me 40,000 into 1.057 0527. 40,000 into 1.0527 is equal to $42,108 receivable. So after 6 months, I'll go to the bank, give them 40,000 euro and bank will give me $42,108 fixed. Guys, अगर 6 महीने के बाद रेट बढ़ भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेट हो जाता है 1.06, so 40,000 into 1.06, answer comes to 42,400. I should not be crying. And they will always ask you, after 6 months, if the rate happens to be 1.06, was hedging better idea? And students go and write an examination, no, hedging was not a better idea, ज़्यादा पैसा मिला होता. Hedging ना speculation नहीं है. Hedging is safeguarding, अपने को बचाने के लिए करता है. उसके बाद 6 महीने के रेट अगर ज़्यादा भी आता है ना, then you should not cry. क्यों? Because अगर ज़्यादा आता ना तो भाई ये 6 महीने टेंशन भी लिया होता आपने. और हमारा बिजनेस टेंशन लेने वाला नहीं है. फॉरेक्स का टेंशन नहीं, फॉरेक्स नहीं कमाना है, प्रोडक्ट पे कमाना है. फिर ध्यान फॉरेक्स पे रखूं कि ध्यान प्रोडक्ट पे रखूं. दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू. हेजिंग इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया. कॉन्सेप्ट समझा? टू गुड. अगर यही रिसीवेबल की जगह पे पेएबल होता, देन आई वुड हैव नॉट सोल्ड एफसी फॉरवर्ड, आई वुड हैव बॉट एफसी फॉरवर्ड. सो अ नटशेल, forward contract, FC receivable, sell FC forward, FC payable, buy FC forward. That's hedging. पक्का? Too good. Hedging के बाद we go to the transactions known as cancellation of forward contract. Now I entered into a forward contract. अभी यही क्वेश्चन को लेके जाता हूँ. What have I done? 6 months के बाद का एक forward contract है मेरा. Sell FC forward.
मतलब मैंने बैंक में जाके क्या कहा है, अग्रीमेंट बनाया, कहा नहीं है, अग्रीमेंट बनाया that I'm going to come to your bank after 6 months, give you 40,000 euros and you should give me $42,108, है ना? But by some reason ये जो 40,000 euro receivable था जहाँ से, that person cancelled my order. He said, Rahul, the material that you sent me was not good. Please वापस ले लो. मटीरियल भेज दिया उसने. अभी अगर उसने मटीरियल ही भेज दिया हमें वापस, तो ये यूरो तो आएगा नहीं ना 40,000 अपने पास फिर से. अब बैंक को जाके क्या बोलूं कि 40,000 यूरो नहीं आने वाला है? ना 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 ना, बैंक विल नॉट अग्री टू दैट गाइस, बैंक विल नॉट अग्री टू दैट. सो व्हाट वी विल हैव टू डू if bank does not agree to that, we will have to cancel this contract. And cancellation means actually not cancellation. Cancellation means reverse agreement. अगर आपका FC सेल स्टैंडिंग है तो हमें FC बाई करना पड़ेगा, पर बाई एग्जैक्टली उसी दिन का मारना पड़ेगा जिस दिन का सेल रेडी था. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको? 1 2 3 4 5 6 आई वॉज स्टैंडिंग ईयर और मैंने बैंक के साथ 6 महीने के बाद का FC सेल मार के रखा है. FC सेल स्टैंडिंग ईयर. अब अगर मुझे अपना क्लाइंट 2 महीने के बाद यहां पे आके बताता है कि राहुल आई एम नॉट गोना पे यू, तो आई कैन नॉट बाय FC राइट ऑन दिस डे. यहां पे बाय करना है, यहां पे सेल. यू कैन नॉट बाय ओनली, बैंक आपको देगा ही नहीं. In India, you cannot hold foreign currency unless and until you require it to receive or pay. What am I trying to tell you is कि हमें 2 महीने के बाद पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है. So I'll have to go to the bank after 2 months and enter into, this was 6-month FC sell, I'll have to enter into 4-month FC buy. जो दिन का सेल स्टैंडिंग है उसी दिन का बाय मार के कैंसिल करना है. That's cancellation. Cancellation is not a cancellation but a reverse transaction. वो कॉन्ट्रा एंट्री था ना अपना, ऐसा ही. अच्छा, अगर हमें 3 महीने बाद पता चला होता तो आई वुड हैव एंटर्ड इनटू 3-month फॉरवर्ड FC बाय. मैंने FC लिख दिया. अगर मैं 4 महीने के बाद बैंक में जाऊं तो आई हैव टू गो फॉर 2-month फॉरवर्ड बाय. 5 महीने के बाद जाऊं तो आई हैव टू गो फॉर 1-month फॉरवर्ड बाय. अगर 6 महीने के बाद बैंक में जाता हूं तो आई हैव टू गो फॉर स्पॉट बाय. उसके बाद कुछ नहीं कर सकता हूं मैं. सिंपल लाइन याद रखो, कैंसिलेशन इज नॉट अ कैंसिलेशन बट अ रिवर्स ट्रांजैक्शन. एंड जिस दिन का एक्सपोजर स्टैंडिंग है उसी दिन वो कैंसिल होगा. क्लियर? झकास. देखो मैंने कोई क्वेश्चन रखा है वहां पे, कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. आई एम लुकिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन देखो. Question number 11. First, a customer with whom bank has entered into a 3-month forward purchase contract. Please underline the word. A customer with whom bank has entered into 3-month forward purchase contract. Bank has entered into 3-month forward purchase contract. भाई बैंक ने परचेज किया है तो कस्टमर ने सेल किया है. और आपको ऐसे ही डायग्राम बना के सॉल्व करना है एग्जाम में, बहुत मजा आएगी. कस्टमर has gone to a bank, 3-month forward, बैंक ने बाई करके रखा है तो हम लोग ने सेल करके रखा है. FC सेल. क्या सेल किया है? Swiss franc 1 lakh at a rate of rupee 36.25. We have sold Swiss franc at rupee 36.25. A customer with whom bank has entered into a 3-month forward purchase contract for Swiss franc 1 lakh at the rate of 36.25 comes to the bank after 2 months. Comes to the bank after 2 months. I am going here today. Bank के पास जा रहा हूँ with the request for cancellation. So if I want to cancel today, what will I have to do? I'll have to go for 1 month forward FC buy.
आई कैन नॉट गो फॉर स्पॉट बाय, 2 महीने के बाद बैंक में जा रहा हूं, जहां पे सेल स्टैंडिंग था वहीं पे बाय करना है, मुझे यहां के बाय रेट निकालना है। क्वेश्चन, ऑन दिस डेट द रेट्स आर स्पॉट, ऑन दिस डेट आफ्टर 2 मंथ्स का रेट क्या है? स्पॉट रेट है CHF, 1 CHF is equal to rupee, so that is rupee per CHF, है ना? rupee per CHF 36.30 slash 36.35, परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, 1 month forward, 1 month forward rupee per CHF is equal to 36.45 slash 36.52, झकास है। अच्छा, रेट किसका है? और उसके पहले भी कौन सा रेट लोगे? स्पॉट रेट। 2 महीने के बाद कुछ करना है? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सा रेट लेना है? 1 month फॉरवर्ड रेट। 1 month फॉरवर्ड एफसी बाय करना है, एफसी सेल करना है। CHF का रेट है CHF बाय, CHF सेल, CHF बाय रेट इज ₹36.52। आपने सेल किया था 36.25, आपको वो ही बाय करना पड़ रहा है 36.52 पे। सो sell at 36.25, buy at 36.52, you are getting a loss. You have a loss due to cancellation is equal to 36.52 minus 36.25, और ये एक CHF था। वैसे हमारे पास 1 लाख CHF का एक्सपोजर स्टैंडिंग था। 36.52 minus 36.25 into 1 lakh is equal to ₹27,000 का लॉस, प्लस इफ यू रिमेंबर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज फिडाई जो ₹100 कैंसिलेशन का चार्ज करेगा। सो टोटल लॉस इज ₹27,100। डू यू अग्री? चकास, क्लियर, टू गुड। एग्जैक्टली ऐसा ही एक जेरोक्स क्वेश्चन, इनफैक्ट ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन और एक आया, सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, एंड व्हाट दे टोल्ड, यू नो, कस्टमर गोज टू द बैंक आफ्टर 3 months। स्टूडेंट को लगा सेम क्वेश्चन है, बट एक्चुअली वो सेम क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज दे सेड कस्टमर गोज टू द बैंक आफ्टर 3 months। पहले हमारा FC सेल स्टैंडिंग है। नाउ इफ आई गो टू द बैंक आफ्टर 3 months, कैन आई से मुझे स्पॉट बाय करना पड़ेगा? एंड उस क्वेश्चन में भी उन्होंने स्पॉट रेट दिया था, 1 month फॉरवर्ड रेट दिया था। वहां पे 1 month फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं था। यहां पे जैसे स्पॉट इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे 1 month फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं था, स्पॉट बाय करना था, है ना? टू गुड, चकास। दिस कंप्लीट्स योर कैंसिलेशन। चलो, एक लास्ट पार्ट कैंसिलेशन के बाद इस सेक्शन में हमारे पास है, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। The customer tells us this time, Rahul, it's not like that I'll not pay you, I'll pay you, but I'll need some extension. So extension is not an extension, it's cancellation and entering into a new contract. Cancellation is not cancellation but entering into a reverse contract. For example, I am an Indian importer, $50,000 payable after 3 months. So 1, 2, 3, I am standing today, 3 महीने के बाद $50,000 मुझे पे करना है। How would I hedge this transaction? Is FC receivable or FC payable? Payable, na? So I'll go to the bank after 3 months and I'll say FC buy, 3 month forward FC buy. Now I had some problem in my business and I definitely don't intend not to pay. I will pay. I called up my customer and I told him, यार वो जो I was supposed to pay you after 3 months ना, I'll not be paying you after 3 months. Is it okay if I pay after 4 months?
I was just trying, and he said yes. He said yes. So now I'm not supposed to pay after 3 months. I'm supposed to pay after 4 months. And I called him, let's say 2 months after the transaction was going to happen. The first transaction was entered. मतलब मैं 2 महीने के बाद बैंक में गया और एक्चुअल पेमेंट करना है अभी नेक्स्ट मंथ में. आई एम टेलिंग हिम आई विल नॉट पे यू नेक्स्ट मंथ, आई विल पे यू 1 month ahead. He said okay. So I go into the bank after 2 months. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए? मुझे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा. So if I go to the bank after 2 months, I will have to go for 1 month forward. Can I say FC sell? अगर FC buy standing था, इसको कैंसिल करने के लिए exactly same day पे FC sell. रिवर्स ट्रांजेक्शन करके मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. If I go to the bank after 1 month, I'll have to go for 2 month forward contract. If I go to the bank after 2 months, I'll have to go for 1 month forward contract. If I go to the bank after 3 months, I'll have to go for spot sell. Are you understanding? Extension is not an extension, it is cancellation. And then I'll have to enter into 1 month extension का मतलब 1 month and 2 month. That means I'll have to enter into 2 month forward FC buy. पर FC buy इस डेट पे नहीं, FC buy 2 महीने के बाद के डेट पे. तो पहले वो कैंसिल करो और फिर वो एक्सटेंशन करो. कॉन्सेप्ट क्लियर? टू गुड. जैसे मैंने सारे चैप्टर्स में किया है, ये चैप्टर में भी आप देखना मैंने एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल के रखा है. एक ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का क्वेश्चन दिखेगा आपको एक्स्ट्रा, एक कैंसिलेशन का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो वहाँ पे एक्स्ट्रा में अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस. ऑडिट कर लेना, आपका फेवरेट है ना. जकास. टू गुड. नाउ दैट कंप्लीट्स माय पार्ट नंबर 2 आल्सो. आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. जॉइन यू बैक अगेन फॉर पार्ट नंबर 3 ऑन फॉरेक्स गाइस प्लीज. सो वी आर डन विद अपना पार्ट नंबर 2. लेट्स मूव अहेड एंड गो टू सम थियोरीज नाउ ऑन फॉरेक्स. सबसे पहला थियोरी एंड इनफैक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स इन द एग्जामिनेशन, द थियोरी इज नोन एज IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी. वी आर गोना लर्न 4 things. One is known as equation, second is known as arbitrage, third is known as hedging, that is basically known as money market cover, and fourth is known as international capital budgeting. 4 चीज आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए IRP में. IRP is interest rate parity. Now what is this theory about? Is basically कि हम लोग फॉरवर्ड रेट्स कैसे निकालते हैं. बैंक्स ने हमें जो फॉरवर्ड रेट्स दिया है वो कैसे निकाला है. So there are various things into it, various theories related to it. One is known as IRP, second one is PPP, and third one is IFE. IRP stands for interest rate parity. On this theory, बहुत अच्छा explanation दिया है आपको, please पढ़ना. But मैं directly short में आपको ये बता रहा हूँ that according to this theory, the forward rates or a currency is said to be at premium or discount depending upon the interest rates. In a simple language, a country whose currency, whose interest rates are lower, that currency is always at premium. So for example, अगर हम लोग बात करें रुपी पर डॉलर, so dollar US में rate of interest is always lower than rate of interest in India. And therefore what happens is the currency dollar is always at premium. Always, guys. Now looking at that, we have an equation. According to IRP equation, F upon S is equal to 1 plus IA upon 1 plus IB. बहुत सिंपल याद है रखना, मतलब IA क्या है और IB क्या है. दैट इज इंटरेस्ट रेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट कौन सी कंट्री का इंटरेस्ट रेट्स लेना इज वेरी सिंपल. रुपी पर डॉलर, रेट किसका है? डॉलर. तो IB विल बी डॉलर. So the equation is F upon S is equal to 1 plus IA 1 plus IB. एक क्वेश्चन रखा आपके इक्वेशन के लिए. The United States dollar is selling in India at rupee 45.50. If the interest rate of 6-month borrowing rate in India is 8% per annum, underline the word per annum. इससे मुझे याद आया
गाइस ये इक्वेशन ना पीरियोडिक इन नेचर है, तो यहाँ पे जितना फॉरवर्ड कैलकुलेट करना है उतने ही महीने का इंटरेस्ट रेट लेना एंड एक सिंपल अजम्पशन के साथ जाना एग्जामिनेशंस में that any interest rate that they have provided to you in the question is per annum and any interest rate you are going to give them in answer is always per annum. बहुत डिस्कशंस किया है रेगुलर क्लास में इसके लिए. सो फर्स्ट एक बार चालू करता हूँ. दे हैव गिवन यू स्पॉट, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 6 month. तो IA and IB should always be for 6 months. India is 8% per annum and corresponding US is 2% per annum. So what is it given to you? Spot rupee per dollar 45.40. Do you agree? I rupee is 8% per annum, that is 4% for 6 months, and we are required to calculate 6 month ka rates. I dollar is equal to 2% per annum, that is 1% for 6 months. Do you agree? And they are asking you to calculate. First one, do you expect United States dollar to be at premium or at discount in Indian forward market? Dollar का interest rate is lower than India का interest rate, and they are asking you, do you expect United States dollar to be at premium or at discount? One, dollar is at premium. Do you agree with that one? Dollar is at premium. That's what I explained you. जो कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा, द करेंसी विल बी एट प्रीमियम. सेकेंड थिंग, what is the expected 6 month forward rate for United States dollar in India? So second thing, according to IRP, F upon S is equal to 1 plus IA upon 1 plus IB. F ढूंढना है, spot 45.40. IA रेट किसका है? डॉलर. तो डॉलर should be a denominator. Dollar is 1%, rupee is 4%, is equal to 1.04 divided by 1.01. So F is equal to 45.40 into 1.04 divided by 1.01. Answers: 45.5 into 1.04 divided by 1.01 is equal to 46.85 rupee per dollar. 46.85. That's what we said. Dollar is at premium. Clear to good. This is IRP equation. Jakas na ekdam. Next one. After IRP equation, the second thing that we have to study is arbitrage. Arbitrage using interest rates. Now, according to arbitrage, guys, we have 4 steps. Do you remember 4 steps? इनफैक्ट ये चीज़ पढ़ाते वक्त मैंने आपको अपने स्कूल की कहानी बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर. माई प्लानिंग फॉर माई लाइफ was to do business on interest rates. I told you that interest rates in US are lower, so my planning was US में जाऊँगा, borrow करूँगा, इंडिया में लेके आऊँगा, इन्वेस्ट करूँगा. So अगर आप आर्बिट्राज की बात करते हो तो we have 4 steps. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Please recall your steps if you can. Step 1, borrow. Step 2, invest. Borrow, convert, invest and sell. Do you agree with that one? Borrow, convert, invest, sell. These are the 4 steps we are dealing with. Perfect है ना? ये steps याद आ रहे हैं आपको? Arbitrage, back to the basics again. 2 parts, 1 part profit, 1 part loss. Both the parts loss possible, both the parts profit not possible, and your responsibility is to show the path of profit. Correct है? अभी अपने छोटे से बुक में तो मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं रखा है, बिकॉज वो बुक मुझे छोटा और बेसिक्स के लिए ही रखना था. बट मैंने आपके एक एक्स्ट्रा शीट में क्वेश्चन रखा है, एंड आई विल गिव यू दैट क्वेश्चन. बेसिकली आर्बिट्राज करने के लिए स्पॉट रेट, the rate that I have given to you is rupee per dollar
47.7123. 180-day forward, rupee per dollar is 48.6690. I rupee is 12%. I dollar is equal to 8%. Arbitrager has rupee 40 lakh से start करना है. An arbitrager takes a loan of 40 lakh, and how has he gained or how has he lost? Now they are giving you rupee, तो हम लोग को rupee से ही चालू करना पड़ेगा. Generally the question will not give you where to start from. So you have two options in this question, two parts. Part 1 India से चालू करो, Part 2 US से चालू करो. India से चालू करोगे तो borrow in India, convert, take it to US, invest in US, sell the currency and bring it back to India. अगर US से चालू करोगे तो borrow in US, convert and bring it to India, invest in India and sell the currency and go back to US. Perfect. Now here it's a very predefined question that I'm working on. For example, borrow, and it's a 180 day, huh? तो 180 days 6 months, so I rupee basically 6 months का 6% हो जाएगा, 6 months का 4% हो जाएगा. So borrow 40 lakh for 6 months. Amount payable after 6 months will be 40 lakh. You're borrowing rupee is 6% into 1.06 is equal to 40 lakh into 1.06 is equal to rupee 42 lakh 40,000 payable होगा. बट मिस्टेक से 42 लाख 40,000 से स्टेप नंबर 2 मत स्टार्ट करना. स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट, आपने बोरो 40 लाख ही किया है तो आप 40 लाख रुपए को ही कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट स्पॉट रेट पे करोगे. कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर, स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर. रेट किसका है? डॉलर. चॉइस ऑफ रेट तो है नहीं, तो रेट डॉलर का है एंड अमाउंट इज रुपी. इट्स गोना बी डिवाइड. So 40 lakh divided by 47.7123. 40 lakh divided by 47.7123. I'm getting 83,835.82 dollar. You borrowed 40 lakh rupee, you converted and took it to US. You will invest in US. Invest 83,835.82 डॉलर. तो रिसीवेबल होगा 83,835.82 इंटू यूएस का इंटरेस्ट रेट था 4%, 1.04 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 87,189.26 डॉलर you will receive after 6 months. I want to convert that dollar back to rupee because arbitrage जहाँ से start किया है वहीं पे end करना है. So sell 6 month forward 87,189.26 and 6 month forward rate. डॉलर का रेट है, अमाउंट भी डॉलर है, multiplied by 48.6690 multiplied by 48.6690 we get 42,43,414 rupee receivable. How much was payable? 42,40,000. How much is receivable? 42,43,414. So we have a profit on arbitrage is 3,414 rupee का profit. अगर ये पाथ में प्रॉफिट नहीं, ये पाथ में लॉस आया हुआ होता ना, तो हम क्या करते हैं? रिवर्सल. वी विल नॉट स्टार्ट विद रुपी, विल स्टार्ट विद डॉलर. बट इंटरेस्ट आर्बिट्राज के 4 स्टेप: बोरो, कन्वर्ट, इन्वेस्ट, सेल. डू यू रिमेंबर? टू गुड. चलो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं एंड दैट पार्ट इज नोन एज हेजिंग.